नमस्कार दर्शकों, आपकी होस्ट सुषमा सक्सेस सिग्नेचर सीरीज़ के अंदर हमेशा ही एक प्रोमिनेंट हस्ती से आपको मिलवाने की कोशिश करती है। तो हम वेलकम करते हैं ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर साहब का, जिनका नाम लेने का कैपेसिटी मेरी जीवा में नहीं है, रियली में नहीं है। बिकॉज़ मेरे क्या, हम सब यूपीएससी एस्पिरेंट के गुरु हैं, मेंटर हैं, तो मेरी जीवा उनका नाम कैसे लेगी। हम सर से ही जानते हैं उनका परिचय, और क्यों मेरी जीवा उनका नाम नहीं ले रहे हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से आज उनके सिग्नेचर सक्सेस हो चुके हैं और किस तरह से ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सिग्नेचर्स को सक्सेस करने में एक मुहिम चला रहे हैं, एक अपना योगदान दे रहे हैं। सर, योर इंट्रोडक्शन प्लीज। वेलकम सर। Thank you very much. Thank you for your kind words. I'm J.K. Dadoo. I'm from the 1983 batch of the UT cadre, Union Territory cadre. I passed out from St. Stephen's College and taught the Delhi University in BA Honours Economics in 1978. Then went on to do my MBA from IIM Ahmedabad, 78 to 80. For 3 years, I worked in the private sector and then joined the IAS in 1983. 83 batch came, most of the officers have retired now because it's now 93 batches become secretaries. So मैंने 35 साल सरकार में काटे हैं, दिए हैं जिसमें I have worked in the central government, 2 big tenures of 7 years each in the Ministry of Defence and 7 years in the Ministry of Commerce, जिसमें I was Additional Secretary and Financial Advisor for 3 years in the Textile Ministry also concurrently. In 35 सालों में one has traversed through the length and breadth of the country. I've seen every state, every union territory, and I have vast experience of dealing with all types of situations in all types of circumstances. I have a fascination for teaching, and therefore wherever I have been posted, I have tried to teach MBA students and IAS aspirants. I am very active on LinkedIn, and you will see at least 10 of my interviews to different agencies for IAS aspirants. People have asked me, how do you write the exam, how do you compete in the interviews, etc. All that has been covered. Times of India regularly, for the Education Times, interviews me for IAS aspirants, several questions. Only about 3 months ago, they had asked me a question: why are arts graduates not getting into the civil service? Why are engineers getting, and should something be done? So this is a serious issue which they were confronting. Several other questions they have raised on and off, and Education Times, I've written articles also on the IAS. So it's a long journey that I've traversed. Last 6 years back, I retired in 2017 December. And 2018, I wrote a very good book called 100 Ideas to Improve Governance in India, where I have said that there are these 100 areas where, because my deep experience in the government, I'm suggesting certain improvements. Now, this is a ready-made cookbook, I would say, for IAS aspirants, because they are asked to write short notes on various things, and their views are asked. What are your views? Yes. So if somebody goes through my book, which is available on Kindle, I repeat the name, 100 Ideas to Improve Governance in India, you will get ready-made answers. And I'm very happy to report that government has implemented 75 of those ideas. Oh, out of 100. Out of Wow. 100. 25 are still remaining, and I'm quite hopeful that as time progresses, as the value of those ideas are realized, they will also get implemented. Yes. Some people ask me, why don't you write a sequel to the book? Now, my experience of book writing is that book writing is easier, book marketing is more difficult, Yes. because the publishers don't help you very much. So, therefore, I'm not contemplating a book immediately, but I want to write a book on what people want in 2047. Okay, good, nice. Because everybody talks about Yes. 2047, Yes. we'll be the largest economy and this and that, 30 trillion, 35 trillion, 40 trillion, all kinds of figures are being floated. So what people want in 2047 from our country is what I'm thinking about now.
ओके 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 मीन्स जिस विज़न की हम बात करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के गाइडलाइन के अंदर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर, तो ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है 34 ईयर्स, 35 ईयर्स संभाला है। एंड सर ने तो वर्ड यूज़ किया रिटायर्ड, वो तो एक गवर्नमेंट फिगर में है रिटायर्ड, बट वो तो अभी 2047 के लिए बुक राइटिंग के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो फॉर एवर हो गए, हमारे फॉर्मर तो हो ही नहीं सकते हैं। एंड यूपीएससी एस्पिरेंट के तो फर्स्ट फेस है आप, क्योंकि इतना आपने पूरा लाइफ दे दिया उन बच्चों के लिए। एंड ऑलरेडी सर आप तो जब बच्चों के इंटरव्यूज़ की आप जब बच्चे तैयारी करते हैं, आप उसमें जाते हैं, तो उन बच्चों का आज बहुत अच्छा लग रहा हो कि सर हमारा इंटरव्यू लेते हैं, आज सर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, आपने हमें इस लायक समझा और आपने अपना इंटरव्यू दिया। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज के दिन इतने बच्चे हम देखते हैं कि 9-10 से बच्चा जो है ना, मैं यूपीएससी के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और उसके बाद आजकल तो फर्स्ट ईयर से ही बच्चे बिल्कुल फाइनल हो गए कि यस मैंने 4 साल के बाद बैठना है, मैंने 3 साल के बाद बैठना है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर प्रेशर है या वो लेवल नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इतने पहले से तैयारी चल रही है, तो उसमें आप क्या गाइड करेंगे बच्चों को? 3 points I'd like to say. Number one, देखिए 4 लाख लोग ये एग्ज़ाम लिखते हैं. Therefore, unless a person has a capacity to work for 8 to 12 hours every day, I don't think he or she should attempt it. I'm not trying to discourage anyone. The point is that this paper, Civil Services Examination of UPSC, has 2 general studies papers and 1 subject study. Yes. हमारे टाइम में एक general studies होता था, 2 subjects. So if you master your 2 subjects, you had good chances of getting it. Yes. Now there's only 1 paper of general study of your subject. Yes. And 2 papers of general study. Yes. And general studies means Vast. it can be asked Portion हो गया anywhere. एक तरह से. That Yes. means national news and international news. Yes, sir. Now national and international news कहाँ से मिलेगी आपको? There are only 3 sources. One is the TV, Yeah. the other is the book, and the third is the magazines. I would strongly recommend that anyone who writes this exam for international news must read The Economist. हर हफ्ते आती है वो, और उसके first 7-8 pages में आपको पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ आ जाती है. As regards India, you have to read Economic Times because Economic Times captures the entire economic news, and one more newspaper, Times of India, Hindu, or whatever you want to read. So national और international news पे इतना ज़्यादा जोर है आज कि if somebody is not clued up in reading, then he has very little chances of scoring well. Now, in the interview also, they ask you all kinds of questions. So, if you are good at national and international news, then you perform well in the interview also. Exactly. So, therefore, the 3 ingredients of success for this is number 1, hard work, Yes. extensive reading, Yes. and intelligent note making. देखिए जो आपने पढ़ा आपको याद भी रहना चाहिए. सो देयरफॉर इंटेलिजेंट नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये तीनों चीज़ करते हैं तो आप रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं विद 8 to 12 hours of study. नाउ कम्स द इंटरव्यू. इंटरव्यू में आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं which includes your ethics, which includes your ability to deliver, which includes your ability to think on the feet. तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है. बिकॉज नॉर्मली अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट trained to appear before an interview board which is full of ex-civil servants and experts, उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है. So there are a large number of institutes which train you. I have been going to Chanakya for some time. Last 10 years and back, I used to go to Chanakya. I've also gone to Byju's for mock interviews. And कोई भी अच्छी organization में अगर आप mock interviews 8-10 कर लेते हैं, so then you get a feel of the kind of questions you are asked. But preparation से कोई compromise नहीं है. Unless you prepare well, you can't succeed in this. So my suggestion would be, if you're an average student and willing to work hard, you can still try. But if you are a very good student and not willing to work, you should not try. Yes. बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. थैंक यू सर हमें टाइम देने के लिए. एंड मुझे लगता है बच्चों को जो एक बोलते हैं ना नटशल में सब कुछ चाहिए, तो मुझे लगता है सर ने हमें वो एक गूढ़ मंत्र, ज्ञान का मंत्र दिया है.
तो हमें लगता है कि हम वाकई ही अगर इस चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकाम ज़रूर पाएंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए। Thank थैंक you यू वेरी very मच। much. थैंक यू।